again. So I was saying was that I want to implement the table tag using classes. So what I'll do is मैं आऊंगा selector में आपको इसका पता है I'll just type over here dot table. Okay. After typing dot table, this is what I get. Remember, the dot actually represents the class. So what I'll do is I'll simply define the background color, let's say as blue. That's all. Okay. And what I'll do is I will now enter. There's another one, and this will be dot table 2. You can clearly hear me now, I believe. Yes, Yes, sir. sir. Yeah, okay. Or इधर आके I'll define is, let's say, red. Okay. ठीक है. So I've defined two. I've defined one table and I've defined another table. Okay. Yeah, well, just one more. Let me define one more so that we can actually see that how does it differ. So dot table 3. Enter. And let's define over here this as your. Yeah. Okay. I will just save it as. I will save it as mystyle.css. Okay. Now, this is my CSS file. And remember, I've defined all this as dot table, and dot table. So it's in the same folder. Remember, your CSS file, photos, and your HTML file should be in the same folder. Remember that. मैं इधर आया. I obviously have to attach this with the CSS file. All of you know it. Just come here. Just say over here, attach an existing. I'll browse for the location. If it's in the same folder, I would directly go there. मैंने okay किया. I've attached it. Now, you know what will happen? If I select this particular row, and if I go to the properties, okay, which actually is below there, let me just bring it up. You will see the interesting thing is you see class over here. This was there before, but probably you never noticed it. इसमें अब क्या हुआ है कि you can see over here is I can select this row and I can define this as this class. I can select this row and we can define it as this class. अब हो क्या रहा है? आप इसको गौर से देख लो इस बात को, बड़ा important है. So that's how we make a table. That's a T-body. This is TR and TD. So TR, the first row, we have defined the following class. In this TR, we have defined the following class. And in this TR, we have defined the following class. So this is how you can actually do it. Classes can play a vital role. So instead, we are restrained to one table tag in CSS. Now we can make as many table designing structure definition using the CSS file. Okay, the CSS class file. So if you want paragraph tags, if you want 10 different paragraphs tags, you can make P1, P2, P3, P4, P5, whatever. You can keep on making them. Did you get the point where classes are useful? Yes or no? Anyone has a question? So you got the idea of why classes are so important? सर आपने जो ये अभी फाइल अटैच किया वो आप एक दफा और बता देंगे? जी बेटा ये देखो ये मेरा HTML डॉक्यूमेंट है. I came over here, okay, CSS designer में. If you don't find CSS designer here, come into window and you will find CSS designer over here. Yes or no? Once this is over here, do you see the source? Okay, do you see the source? Yes. Okay, I'll explain once again, beta. So इसमें आओगे, you see this plus, you click on this plus, and you will say over here is attach an existing CSS file. इसको browse करो, wherever CSS file is, उसको click करो, okay करो, and it is attached. Yes or no? Okay? Or as soon as you attach, आप देखोगे इधर कि you will get this. Okay? Right? Get my point? Yes. आपको link आएगा. Yes. अच्छा, someone said कि can I explain this again? बेटा मैं दोबारा explain कर देता हूँ. I was just trying to explain the point कि अगर if I make table in HTML and if I want to define the structure of the table in CSS file, तो CSS में there is only, if I type over here, is table. तो सिर्फ एक ही टेबल टैग होता है, आपको पता है टेबल का एक ही टैग होता है. आपके पास मल्टीपल टेबल टैग्स नहीं होते. There is only just one H1 tag. There is only just one PP paragraph tag. Multiple नहीं होते. So if you want different like table format 1, table format 2, table format 3, you can define them over here. मैंने क्या किया, मैंने define किया dot table.
डॉट टेबल। अभी डॉट टेबल क्या है? अगर आप सीएसएस में देखोगे, डॉट टेबल मींस दिस इज टेबल की डेफिनेशन है, बट डॉट इट्स dot actually means it's a different class. So first table class has the following property, second table class has the following property, third table class has the following property. तो three different table tags हैं, okay, different का structure है. आप when I attached it over here with HTML क्या हुआ है? If I select this row, properties में आप directly देख रहे हो कि class inherit हो गई है. I can make it black, I can select this, I can make it this, fine. बल्कि आप ये भी कर सकते हो, instead even if you do this, आप इधर आओ, let me just copy this, Control C, and let me define this table as this, okay, मगर उसके लिए obviously मुझे फिर ये remove करने पड़ेंगे, वरना वो तो फिर obviously I don't want कि डबल डबल होना, और ही राइट, और ये हो गया, ठीक है, और I have to remove this, I have to remove this, and I have to remove this. ठीक है, अब क्या हुआ? आप देख रहे हो this table has been defined according to this class. मैं एक काम करता हूं, मैं डिफाइन कर देता हूं दूसरे टेबल को, this one. So I can simply come here, and this is the second table I have. Okay. So within the table tag, I can define over here is, let's say it was table. I think so there was only one table. Yes, it was. So you see, this black color has been defined where? In the CSS file. I have not defined it in HTML. ये भी CSS में डिफाइन हुआ है. So टेबल को मैंने डिफाइन किया, डॉट टेबल को इधर इधर, और उसको यूज किसा कर रहा हूं मैं, टेबल टैग में कह रहा हूं class this and then class this. I hope the point is clear. What classes are? Yes or no? Is this clear, beta? All I did, beta, was मैं इधर आया था, और मैं दोबारा बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर डिफाइन करना चाह रहा हूँ पैराग्राफ का डिफरेंट, ठीक है. सो आई विल कम हियर, मैं सिलेक्टर में आऊंगा और मैं लिखूंगा डॉट P1. P is for paragraph tag. मगर if I'm trying to define different paragraph tags, तो P1 डिफाइन किया, और इस P1 को हम कर देते हैं, let's say the font family of this should be this, it should be bold, and the color of this font should be this. ठीक हो गया? तो what have I done? आप ये नीचे आके देखो, मैंने डिफाइन कर दिया क्लास P1. Yes or no? RGB का बेटा मैंने आपको बताया था, maybe all of you present or not, that how can we do the conversion? Like, you should remember मैंने बताया था कि 50% red should be on, 25% green should be on. Did I or did I not? Can you recall that lecture? Red, green, and blue. 0 is for off. FF is for full on. When we write FF, it's white. When we write 0, it's mean it's black. You get my point? ओके, या मैं अब दोबारा पूछ रहा हूँ, इज इट क्लियर? अब मैं डिफाइन करता हूँ एक और पैराग्राफ टैग. ओके, राइट, ओके, राइट. तो इधर में डिफाइन कर देते हैं इसको, लेट्स से डॉट P2. ओके, और P2 को मैं डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से आई कैन डिफाइन दिस एज रेड, आई कैन डिफाइन दिस, लेट्स से फॉन्ट फैमिली एज this, and what else? Yeah, maybe I can just indent this, and fine. So you see, I have dot P1, I have dot P2. Till now, we have just been talking about the paragraph tag. अब क्या करते हैं हम? इधर आते हैं, और इधर आके, if I just type some random text, okay, you can actually have different formatting over here. So you see this? ये भी class के अंदर आ गया. This is P1, and this is P2. Abhi tak, remember we've been talking about this only. Do you remember? But now today what we're doing is, हम उसको classes में लेके जा रहे हैं. So I have defined 2P. Maybe I can define 4. Maybe I can define heading 1, heading 1, 2. Like there are lots of choices I have now. So अब एक मेरे पास एक limited tag नहीं है. एक tag कि मैं multiple tags बना सकता हूँ उस तरह के.
डिड यू गेट दिस पॉइंट? मैं इससे आगे आज डिस्कस नहीं करता, डोंट वरी, हम फिर पॉइंट बाय पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। इज दिस क्लियर? क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Everyone, whoever is online with me right now, is this concept clear? Yes or no? Classes का clear हुआ कि नहीं हुआ? Yes. गुड, गुड। आपने ये काम करना है, आपने मेटा टैग्स और क्लासेस इन दोनों चीजों को आज रिवाइज करना है। दैट्स ऑल व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट क्लास में वट एवर इज लेफ्ट, आरजीबी वगैरह बाकी चीजें, टी बॉडी, टी हेड और इनलाइन स्टाइल्स, विल रैप दैट अप इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। ठीक है। और आपने एक और काम करना है इस क्लास में। होल्ड ऑन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू आई हैव राइट नाउ? ओके, दे आर जस्ट प्रॉब्ली 14 with the participants. Just 1 second, let me minimize this. I don't see the participants. So ये आप लोगों ने काम करना है कि दोनों क्लास में से आपने ड्यूरिंग दिस वीक या अगले वीकेंड आपने हर एक से पूछना टाइमिंग्स का। ओके, यू कोलैबोरेट अमंग ईच अदर, और मुझे कोई एक स्टूडेंट बता दे प्राइवेटली चाहे तो कि सर दिस टाइम वी कैन हैव द क्लास, मगर फिर ये ना हो कि क्लास के इस टाइम पे, क्लास के इस टाइम पे। Is there some one person who can represent both sections and let me know? मैं चाहता हूँ मैक्सिमम अटेंडेंस हो, वो टाइम जिसमें सारे बच्चे आए। यू गेट माई पॉइंट, कि मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े। डिड यू गेट माई पॉइंट? Yes, sir. Okay, we will let you know. और you're from one class, who's the other one from the other class? Who's the representative from the other class? हाँ, I'll do it. Muntaha. वेरी गुड। बिकॉज देखो देखो, अगर मैं कहूँगा कि नहीं, यू नो बेटर, वी विल हैव द क्लास ऑन मंडे एट 8, तो ऑब्वियसली अगर मैं अपनी मर्जी करूंगा, ऑब्वियसली उसका ये होगा, फिर यू विल हैव क्लासेस, और फिर मैं चाहता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स आए, so that I don't have to repeat again and again. Okay, so let me know whenever we can have the next class. Okay, आप दोनों मुझे कोऑर्डिनेट करके बता दो। So मेरा टैग्स को रिवाइज करो, क्रैम द टैग्स एंड प्रैक्टिस इन ड्रीमवीवर, और क्लासेस को प्रैक्टिस करो। ठीक है? एनी क्वेश्चन क्यूरी यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, इन द क्लास ग्रुप। ओके, इज दैट क्लियर? एनी Yes. क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? Yes, sir. I have a question. Sir, जी ये जो बोलो। भी हमने classes की हैं, ये represent क्या करती हैं on a website? बेटा बात सुनो, मैं दोबारा बात को रिपीट कर रहा हूँ कि क्लासेस का फायदा ये है कि अगर मैं आपको कहता हूं कि यू नो व्हाट, यू हैव टू मेक अ टेबल टैग इन सीएसएस, मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूं, तो आप क्या करोगे? आप इधर आओगे सिलेक्टर में, और आप लिखोगे टेबल टैग। ठीक है? यू विल जस्ट टाइप इज द टेबल टैग, एंटर। अब सीएसएस में देयर इज ओनली वन टेबल टैग, आपको पता होगा, एक ही टेबल टैग होता है, मल्टीपल टेबल टैग नहीं होते। So what if you want different types of table tags? Table format 1, table format 2, table format 3, so on and so. You get my point? बेटा Sir, जो if आपकी you, आवाज जो थी वो जी जी, बेटा मेरा नेट तो ठीक आ रहा है। You're lagging. Beta, you can gain access to, can you hear me now or not? Yes, we can hear you. Yeah, Yes, we can. what I'm saying is you go to SirSime.com, or what you do is when you come to SirSime.com, come to student portal, okay, and you have to register over here. Enter your username, password, whatever you want, sign up karo, enter your full name, the course you're selecting, this one, IGCSE ICT, और पासवर्ड आप करो, मुझे बताओ, कोई पासवर्ड अपनी मर्जी का डालो, उसके बाद आई विल अप्रूव इट, फिर आप लॉग इन कर लेना। गेट माई पॉइंट? डिड यू गेट माई पॉइंट? Yes. ओके। और Yes, sir. who was asking me about CSS, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि CSS का ये फायदा है क्लासेस का, CSS क्लासेस का, सॉरी, कि CSS में there is only one H1 tag. With the help of classes, you can have heading 1 के 10 different heading 1s. Heading 1 1, heading 1 2, heading 1 3, heading 1 4, या paragraph की. So you add more powerful feature to CSS with the help of classes.
ये बेटा आई प्रूव इट, मैं शाम को जितने भी होंगे ना, ऑल ऑफ यू डू इट, मैं सारों का प्रूव कर दूंगा, ठीक है बेटा। इस क्लास से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपको कि नहीं हुआ? यस सर हुआ है। मैं आपको पास पेपर इसलिए दे सकता, मैं बार बार रिपीट करूं, क्लासेस पास पेपर में नहीं आया हुआ, मगर आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस टॉपिक को, राइट? ओके, चलो Yes. कोऑर्डिनेट करो। और देयर इज अनदर मैसेज दैट केम इन, ओके राइट। और मेक अ लिस्ट ऑफ पॉइंट्स इन वेब ऑथरिंग और एनी पास पेपर करो प्लीज। अब जिन लोगों ने पास पेपर नहीं किए हुए वेब ऑथरिंग के, स्ट्रिक्टली करना शुरू कर दो। आई विल शेयर वेब ऑथरिंग पास पेपर इन द ग्रुप एंड पास पेपर फाइल्स। मैं 2 पास पेपर शेयर करता हूँ आज, और उसकी वीडियो सोल्यूशन। और उससे भी बेहतर है कि आप मेरा लॉगिन वेबसाइट का लॉगिन एक्सेस कर लो, वहां सब कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, राइट? Okay, but I'll share. यस Okay, sir. सर। I will share. I will share in 1 hour. Okay, right? I'll share the date sheet as well. मैं आज सारा शाम को करता हूँ, ठीक है बेटा? तो see you in the next class online. ठीक है? Okay, sir. Okay बेटा, see you then all of you. Okay, all of you. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।